जितना शरीर में चलेगा उतने भरना आदमी कुछ कर पाएगा ही नहीं। Naina Sharma, please mute your mic.
Is sir not available today? I haven't asked. I think हम लोग भी पूछ सकते हैं सर को मीटिंग में होने का जरूरत नहीं है। हाँ मतलब सर रहेंगे तो बेटर रहेगा इसलिए। सर सारी मीटिंग्स तो ज्वाइन नहीं ना कर पाएंगे। सर लास्ट टाइम बोले थे क्या कि बिजी हैं कुछ? फिर लेट मी आस्क। सर ऐसा कुछ बोले तो नहीं तुम? Just inform him no for once कि we are having a meet right now. ओके। Who left Sana? व्हाट? No, someone left the meet right now. और जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं अभी, उनका इंट्रो हो गया क्या? हाँ इंट्रो तो हो गया। ESG वाले में वो ज्वाइन कर लिए हैं पहली कोई भी मीट अभी तक, ये जो एक ग्रुप मिनट। ज्वाइन किया? या हर्ष सर बिजी हैं अभी। हर्ष। हाँ ठीक है। और ये जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं, उन लोग का ESG का टीम का मीट में है वो लोग अभी तक? ये तो ईएसजी का फर्स्ट मीटिंग है अगर सब लोग जो अवेलेबल हैं। बाद बाकी ओरिएंटेशन में तो ईएसजी के बारे में बताया ही गया था और क्या क्या काम हुए थे वो बता ही चुके हैं। और फिर आर्टिकल्स भी भेजे ही थे और क्वेश्चंस भी आरटीआई के भेज दिए थे ताकि वो लोग एक बार गो थ्रू कर लें। तो उन लोग में से क्या कितने लोग आए इस टीम में नए? ऐसे 9 लोग ने पोल किया था, लाइक 9 लोग हैं ईएसजी में न्यू इंटर्न्स, लेकिन अभी तक ज्वाइन सिर्फ व्हाट्सएप सिक्स। ग्रुप में? हाँ। हाँ 9 लोगों ने ज्वाइन किया था ईएसजी टीम, लेकिन अभी मीटिंग में सिर्फ 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। बाकी 3 लोग से एक बार चेक करना क्या स्टेटस है। आई थिंक अभी तो तक तो मैंने पहले यार बोल चुका है, पहले भी अभी भी 1 घंटे पहले भेजा ही था। तो एक एक को आइडेंटिफाई करने में तो टाइम लगेगा। हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं फिर उन लोग हाँ की। स्टार्ट कर लो, आप स्टार्ट कर लो। मैं एक बार ग्रुप पे टेक्स्ट करता हूँ कि ऑल दोज हु आर नॉट जॉइंड, रिमेनिंग का पूछ लेता हूँ मैं। आप स्टार्ट कर लो। स्टार्ट तो आपको ही करना था ना, लाइक सर का जो आइडिया था वो आप डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए इन लोग से। ठीक है, एक सेकंड। ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, who all have joined just recently. आप लोग वो कर सकते हैं, मतलब थम्स अप कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है आपके पास मतलब बताने का। नैना शर्मा, ओके। आर्य प्रकाश एंड माही श्रीवास्तव, ओनली 3। वर्धा रत्नम, आर यू ऑनलाइन और यू आर नॉट? आफरीन, I think Varda is also a new name, but I think she's not online. अच्छा, ओके ठीक है। So hello everyone, I think you would have been briefed about ESG initiative that we at Tarumitra we are taking up. If I'm not audible at any point, just interrupt me. Now, since you must also be aware that we have filed RTI and we have received response on those RTIs. Now the next job is
I'm telling you all this because you guys have been sent RTI ka wo document by whoever has filed, or I think reply also in most of the cases you would have received. My reply, I'll check and I'll share with you all. So after going through all of those documents or the answers to all those questions, you all have to summarize all of it into a note. एक Word document में you will have to summarize कि what all did you understand, और थोड़ा एक systematic way में कि this was the question, this is the answer, concerned ministry. ये जो format I'll send you इस format में, because if you follow a format it will be easy for you. It won't be difficult if you follow a format. So in that situation you all have to adhere to the format. Again, you can change, but then I don't think so that you'll benefit by changing the format or not following the format. So you'll go by the name of the, you'll go by the question, you'll go by the answer, then the concerned ministry that provided you the answer, and what was the document, name of the document, and if there's any document in the answer. And after that, you will write what was inside the document. Not everything, the address क्या था, वो क्या था, not everything. What was the essence of the document? कि उस document में लिखा क्या था in regards to ESG. Now, after telling all of this, I would again like to know, have you all gone and read about ESG? खुद से, not like we are briefing you or हम बता रहे हैं कुछ की क्या है. Or the new joinees, I'm asking you all. Okay, Mahi says not yet. Anyone else? Arya? Arya, Naina Sharma, Varda? You guys not yet, okay. Yes, I did. Who's this? This is Arya. Acha, Arya, okay. Yes, Arya. What did you understand? Apart from the definition, जो उससे अलावा, why are we, हम लोग क्यों इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर एक टीम बना दी है? Why do you think so? What do you think so? Okay, I guess not much, but I know that it is about environment and like all the things that are joining along with the social outcomes and the environment and what is affecting it, maybe. Okay, I'm not sure, Correct, sorry. correct. So that was something basic, but I'll tell you why. Since you'll get to know later on also, but then I'll tell you that right now we are concerned with drafting that reply document into our own note. ठीक है, तो reply document जो हमको मिला है या फिर reply जो मिला है उसको हम एक note में बनाएंगे. You interns, you all have been sent all of these documents. Those interns who are working for 1 or 2 months before you or 3 months before you, they have done their part up till filing of the RTI. Now you all have to contribute in the way of making notes. So I'll request all of you to, if you have, I'll also ask you all, did you see the document or the reply that was shared to you, the questions that were shared to you? Did you go through them? Yes, Varda, Nana, Mahi, Arya, Afrin. राजनीति सिर्फ क्वेश्चन सेंड हुए हैं, रिप्लाई तो अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना के सेंड नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चन सेंड हुए हैं. अच्छा, तो वो जिनका इनका आया था उन्होंने रिप्लाई नहीं भेजा इनको शेयर किया अभी तक? नहीं, रिप्लाई तो नहीं सेंड हुए, एक जगह So डॉक्यूमेंट बना के. I think today we'll share the reply also, because last time हम लोग सर के साथ ये डिस्कस किए थे ना कि रिप्लाई शेयर करना था इनको, शायद मेरे को लगा कि हो गया होगा, बट अभी रिप्लाई शेयर कर देंगे. एंड यू ऑल हैव टू गो थ्रू दैट रिप्लाई. यू ऑल हैव टू रीड. 1-2 पेज का रिप्लाई, ज्यादा बड़ा नहीं है. यू विल हैव टू रीड कि what is the meaning in that reply, what are they trying to say. Sometimes you'll also see कि RTI का रिप्लाई बहुत अजीब सा आया है कि कोई रिप्लाई नहीं आया है, या नीड्स नो रिप्लाई आया, या कंसर्न मिनिस्ट्री कोई और है. तो उस केस में कभी कभी दूसरे मिनिस्ट्री के किसी नोडल ऑफिसर ने रिप्लाई दिया भी है, किसी किसी ने नहीं भी दिया है. So all of that you'll get to know if you read those replies. हम लोग के RTI का. We'll also share with you the document. I think we have shared the document, but you all were not there on the group. So now that you've come back, we'll share it again. Using that document also, you can check the reply.
but then we'll only, all those who have filed the questions, we'll only share you the reply also, so that you don't have to do a lot of work. So आप लोग, you please read that reply and make a note. मतलब whatever way you can, मतलब जैसा भी नोट बनता है, it doesn't bother us कि आप कैसा नोट बना रहे हैं. आप नोट अपने हिसाब से बनाइए, 1-2 पेज का, उसके हिसाब से. और एक फॉर्मेट विल शेयर यू फॉर योर, फॉर योर यूज, कि फॉर योर हेल्प, कि यू हैव टू नो, मतलब आई मीन यू नो कि तुमको क्या क्या चीज जरूरी है उसमें. जैसे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंसर्न मिनिस्ट्री क्या है, और प्रोविजन का नाम क्या है, या फिर उसमें प्रोविजन में तुम्हारा, या फ्रेमवर्क के अंदर सर्कुलर आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है. जो कुछ भी तुमको आंसर मिला है, वो आप ड्राफ्ट करोगे, मतलब ड्राफ्ट एज इन 2 पेज का नोट बनाओगे आप, और फिर यू शेयर इट ऑन द ग्रुप. फॉर टुडे this was this was something which was discussed in the last meet. Sana, you want to add something else? Last meet के हिसाब से जो हम लोग डिस्कस किए थे. सर ने कहा था कि ये चीज तो करने के लिए, बट साथ ही साथ फिर वो रिपोर्ट बनाने के लिए मेन, कि इंडिया में लाइक इस आंसर से हमारा आउटकम क्या निकला है, और हम लोग इंडिया में कितना काम हुआ है और कितना नहीं, उसके ऊपर फिर फाइनल रिपोर्ट बना सके हम लोग. तो आई थिंक दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू, मतलब एक्चुअली. लेकिन उसके पहले दे सब प्री कर्सर या प्री स्टेप ये है कि यू मेक अ नोट, या 2 पेज का. आप वो कंपाइल करो जो डेटा आपको मिलेगा अभी, उसको मतलब अपने नोट बनाओ, और उसके बाद द दिस इज द प्राइमरी गोल. ठीक है, हम लोग का सेकेंडरी गोल क्या है, या फिर मतलब फाइनल गोल क्या है, कि वी हैव टू, हमारे आई मीन यू एंड अस, वी ऑल, जो नए इंटर्न्स हैं, जो पुराने वाले मेंबर्स हैं, वी ऑल हैव टू टुगेदर सिट एंड देन मेक अ नोट ऑन कि क्या अभी आउटकम निकल रहा है इससे. तो पहले हमको क्या रिप्लाई मिला, अंडरस्टैंड फर्स्ट. हम लोग क्या करेंगे कि क्या रिप्लाई मिला, उस रिप्लाई से हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, और जब हम वो डॉक्यूमेंट्स को पेरूज करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, तो उससे जो आउटकम निकलेगा कि आर दी मेजर्स और दी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द ESG, रिगार्डिंग द environment related norms or the environment related framework of the ESG enough in India or not, or if it is enough to what extent. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा कि कोई है भी कि नहीं है. So you'll get to know after reading that reply which will send you. You'll actually go through the reply and then you will get to know, you go through the document and you'll get to know कि एक्चुअली में कोई फ्रेमवर्क है कि नहीं. अगर है तो कितना सफिशिएंट है, और कितना सफिशिएंट है, और अगर सफिशिएंट है, मतलब आई डोंट थिंक कि आपका कंक्लूजन ये आने वाला है कि सफिशिएंट है, बट स्टिल अगर आपका कंक्लूजन ये आता है कि सफिशिएंट है, तो टू व्हाट एक्सटेंट. इट इजंट लाइक कि अब हो गया, अब इसके बाद देयर इज नो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, या नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, या नो प्रोग्रेस रिक्वायर्ड. टू व्हाट एक्सटेंट इज इट सफिशिएंट. So this is the final goal, final objective. But to do that, you need to first go through those documents, make a note of it, because you can't remember everything in your head. It's not easy. So आप लोग उसको एक डॉक्यूमेंट को देख के, आप जो भी आपको मिलेगा अभी शेयर होगा आपके साथ तुरंत, कुछ मतलब आई थिंक फ्यू आवर्स, और फिर आप उसको देख के पेरूज करके आप एक नोट बनाओ 2 पेज का, और उससे आप एक कंक्लूजन डिराइव करो कि क्या मेजर्स जो हमको पता लगे गवर्नमेंट के रिप्लाई के थ्रू. सी RTI व्हेन वी फाइल, we expect reply from the government. And why do we need reply from the government? We can also search the Google, we can also search the internet, but sometimes that data available on the internet is not reliable. And even if it is reliable, you know that it is reliable, I know that it is reliable, everyone knows, but government denies. They say no, this is not correct. According to our information, according to our what we know, this is not correct. So RTI, when you file, you get a reply from the government. So the reply that the government gives, or the government bodies give while you file an RTI, cannot be contended, because यहाँ पे कोई कंटेंशन रेज नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द अथॉरिटी जिसका तुम, मतलब जिसको तुम मानोगे कि यू विल से कि ओके, दिस इज द अथॉरिटी, दिस इज द गवर्नमेंट दैट इज गिविंग मी द डेटा. सो इस चीज को यू कैन नॉट क्वेश्चन, it is coming from you only. So this is to get an authentic source of information. RTI is an authentic source of information actually. So this is it. Now जब आप लोग कंक्लूजन डिराइव करेंगे, जब आप लोग मतलब कंपाइल कर लेंगे, उसके बाद कंक्लूजन डिराइव करेंगे, सो देन विल हैव अ मीट, विल डिस्कस कि किसका इसका क्या कंक्लूजन आया. In that process you can also go ahead and read something more about ESG,
या जो भी डिस्क्लोजर आया सेबी का, उसके बारे में आप और जाके पढ़ सकते हैं। और फिर आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने अपने लेवल पे, आप लोग मतलब आपका अपना अपना यूनिक ओपिनियन हो सकता है कि व्हाट कैन बी डन टू करेक्ट दिस डिफॉर्मिटी इन दिस नोटिफिकेशन सर्कुलर। इस सर्कुलर में क्या अप्रोप्रिएट नहीं है या क्या सफिशिएंट नहीं है, तो हम उसमें मतलब और क्या सजेशंस आप दे सकते हैं फाइनली। एंड वी कैन फॉर दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन, बट अगेन ऑल ऑफ इट आफ्टर यू डू समथिंग। अगर आप एक बार कंपाइल करोगे तो ही उसको हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ इट इज ऑन यू ऑल यू जस्ट ज्वाइन, कि now you have to move, मतलब you have to take this entire entire thing ahead by going through those documents and making a note of it. And then for you, all those who have been working with Arumitra from before, they'll be reviewing your work. So हम लोग रिव्यू करके सर को दिखाएंगे, एंड देन सर विल सजेस्ट फ्यू चेंजेस, या फिर सर विल मार्क फ्यू, sir will flag things that sir thinks needs to be flagged, and then we'll discuss. या सर को लगता है कुछ डिस्कस होने का चीज है तो we'll discuss all of it. So अगर if there's any doubt regarding this very thing, anyone can ask me अभी या फिर टेक्स्ट पे बाद में भी, या अगर किसी को समझ में नहीं आया इंटायरली तो वो आई भी पूछ थिंक सकता है। हर्षनिधि, ये काम देने से पहले ना मुझे लगता है कि हम लोग को ना इन लोग से एक बार पूछ लेना चाहिए, लाइक कि इन्होंने ESG के से क्या समझा। हाँ, तो मैंने पूछा कि इन्होंने पढ़ा कि नहीं, तो आई थिंक कि वो डॉक्यूमेंट में भी कुछ कुछ चीज एक्सप्लेन कर देगा। अगर नहीं तो उसके पहले आप लोग एक बार जाके पढ़ लो, क्योंकि 2 सेशन ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। और यूजली इट इज एडवाइज्ड कि यू गो एंड रीड योरसेल्फ, एक दिन 2 दिन, तो वी कैन पोस्टपोन दिस फॉर 1 or 2 days मोर। और जब तक कि हम लोग आप लोग एक मतलब एक और मीट रखते हैं जहाँ पे आप लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल यू अंडरस्टूड। सो फॉर दैट वी कैन एक टेक अनदर एक टू और डेज चीज है हर्षनिधि कि हम लोग, एक चीज, ओके सॉरी ओके सॉरी, वो हर्षिता गो अहेड। ओके सो या आई वाज सेइंग कि अभी जैसे अपन न्यू थे ना, ये लोग भी न्यू है ईएसजी को लेके, और आज बहुत सारों ने ज्वाइन नहीं किया है। बहुत तो सारे नहीं, आई थिंक 3 लोगों ने नहीं किया है। आई थिंक 5 ओके, ऑफ देम। सो या सो आई वाज सेइंग कि उन लोग को पहले टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अपने को भी टाइम लगा था ईएसजी क्या है क्या नहीं है, इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सब जानने में। तो उन लोग को भी थोड़ा टाइम देते हैं ना, ये लोग पता करेंगे, उसके बाद एक मीट रखते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कितना समझा, क्या क्या समझा ईएसजी के बारे में। देन वी कैन गो विद द कंपाइलिंग थिंग, क्योंकि ऐसे ऑल ऑफ अ सडन करेंगे तो फिर वो मतलब अच्छे से नहीं होगा ना फिर। So I was assuming कि they have read something, but even if they haven't, it's just a 1 day 2 day thing कि आप लोग कुछ पढ़ अरे लीजिए थोड़ा सा। तो इट्स ओके ना, लाइक अभी फेस्टिवल्स थे, फिर एग्जाम्स भी थे बहुत, ओके तो हम क्या हुआ? आई गेस नेक्स्ट वीक, शी आई वाज सेइंग सेइंग कि कि अभी अभी फेस्टिवल्स थे। फेस्टिवल्स, शी सेइंग कि अभी फेस्टिवल्स भी थे और एग्जाम्स भी थे, तो बहुत लोगों ने गो थ्रू नहीं किया होगा। तो आई सजेस्ट कि आप लोग गो थ्रू एग्जैक्टली, करिए कि व्हाट इज ESG। उसके उसके बाद अभी मंडे है ना फिर, आज, तो 2-3 दिन बाद नेक्स्ट मीटिंग रखते हैं, हाँ, उसमें ये और डिस्कस तब करते हैं तक कि जो हम इन्होंने लोग हैं क्या क्या जिन्होंने, समझा, कितना समझा। यस यस, और जब तब तक हम लोग जिन्होंने क्वेश्चंस लाइक RTI में फाइल किए थे, तो उस जो उन सबको एक जगह कंपाइल करके भेजेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर इन लोग को एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट में ढूंढना, फिर आंसर्स देखना तो एग्जैक्टली, दिक्कत होगा। एक बार हम ही लोग एक जगह नहीं, तो like, हम क्या लोग क्वेश्चन है कंपाइल उसके करके ही आंसर, भेजेंगे। विल हाँ यस, कंपाइल और मे बी विल मेक अ गूगल डॉक या फॉर्म जो लाइक भी है। एक PDF में और सेंड कर देंगे ना, लाइक कि क्वेश्चन ये था, संजना, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, उसका संजना, आंसर ये था। यस संजना, यस। वो जो क्वेश्चन वाला डॉक वो है ना, उसमें जो पर्टिकुलर व्हाट टू से, लाइक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो क्वेश्चन गया था, उसके नीचे एडिट करके उसके रिप्लाई जैसे अच्छा, अल्टरनेटिवली लिख देते हैं ना, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर साथ में रहेंगे तो उन लोग को भी रिपोर्ट बनाने में, या फिर हम लोग को तो भी फर्दर फर्स्टली इजी फर्स्टली पड़ेगा। I'll tell you कि हम लोग सबसे पहले तो दो चीज साइमल्टेनियसली चलेगा। ये कि 5 लोग जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे थे उनका रिप्लाई एक जगह नोट हो रहा होगा, विच हैज नथिंग टू डू विद दीज न्यू इंटर्न्स। इनको दे डोंट नीड टू बी बॉदर्ड। ये हम लोग का राइट, लुकआउट है कि हम लोग कैसे कंपाइल करके इनको भेजेंगे, फर्स्टली। Secondly, what they need to know is कि they should know something about ESG first, which मतलब only एग्जैक्टली, one of them have read.
तो इन द मीन वाइल आप लोग जाके पढ़ो 1 दिन 2 दिन, और संजना विल कीप अ ट्रैक कि 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया. So she'll fix the next meeting. We all have to report on that day, मतलब Exactly. be online on that day. So Sanjana will ask or make changes accordingly कि जिसका जो एग्जाम है वो हैम्पर नहीं होगा या फिर एग्जाम का डेट से क्लैश नहीं करेगा. I think Anushka has just joined. She's a new joinee. Yeah, exactly. No So issues. I will give someone the can mic. brief her later on if someone knows her. तो सबसे पहला मेरा क्या था कि 2-3 days या 3 days जितना भी संजना विल कीप अ ट्रैक एंड शील फिक्स अ मीटिंग अकॉर्डिंग टू सर्स अवेलेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ अस एग्जाम्स वगैरह, एंड देन वी ऑल हैव टू फॉलो वट एवर डेट शी इज फिक्सिंग. ठीक है. एंड देन शील ऑल्सो फिक्स द टाइम अकॉर्डिंग टू मतलब सबका वो शील केटर टू एवरीवन्स वो जो भी एंगेजमेंट Yes, वगैरह है yes, yes. सबका. And then Yeah, in good the enough. meanwhile, all those who've joined recently, they are requested to please go through the internet. It's very easy. It's just half an hour. It will take just half an hour to read everything about ESG. You will get to know in and out आधे एक घंटे में, because it is not something new. It is put into a new form. So it is not a new concept. ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज जाके एक बार गो थ्रू द इंटरनेट, गो थ्रू दी वेबसाइट, विकीपीडिया, जो भी है, वट एवर प्लेस यू फाइंड सुटेबल, यूट्यूब. हाफ एन आवर टू 1 आवर हाँ, में यू विल अंडरस्टैंड. 2 से 3 दिन कुछ गया लिंक्स जितना भी भी थे गया. ना। या हर्ष, तुमने भेजा था अपने टाइम, तुमने भेजा था ग्रुप में, तो वो लिंक्स तुम फिर आई से एक थिंक वी बार कैन फॉरवर्ड कर रीशेयर दोज देना। लिंक्स. आई थिंक वी या कैन रीशेयर एग्जैक्टली। दोज लिंक्स. बट या देन दैट उनको वुड हेल्प हो हेल्प जाएगा। आफ्टरवर्ड्स. आई थिंक खुद से देखने में ज्यादा फायदा होगा. या सो गाइस, गो थ्रू द बेसिक फर्स्ट, देन ओनली वी विल शेयर द लिंक हाँ, एंड we'll share the link, but you don't rely on that link that we are sharing. I think that would, मतलब खुद से अगर if you go, तो you will have an idea कि हाँ where did you start. You'll get questions and then you'll search more. तो उस हिसाब से I'll request every one of you just search for ESG. There are one or two um, full forms of ESG. Don't go to all of them. There's just one full form that we are concerned with, environment, social governance. बस ये वाला ESG से हम लोग concerned है. उसमें भी हम लोग environment से concerned है. But ठीक है, that is something आगे का चीज. First you have to search about ESG. अब उसके बाद में read करो एक बार, 2 दिन 3 दिन टाइम लो, बट आपको 1 घंटे से ज्यादा आइडियली टाइम नहीं जाने वाला आपका टू अंडरस्टैंड. बट आई टेल यू वी आर नॉट फिक्सिंग एनी मीट इमीडिएटली. अभी छठ भी है, सो आई थिंक संजना कैन केटर टू ऑल ऑफ इट की कब अगला मीट हाँ, रखना छठ है. के बाद ही करते तो ज्यादा बेटर हाँ रहेगा, क्योंकि फिर इसके ठीक है. नेक्स्ट डे ESG FC का मीटिंग होना है, एग्जैक्टली, हम फिर लोग को छठ तो हो हाँ बैक टू जाएगा। बैक मीटिंग्स है ना, 14-15 भी। शॉर्ट है. तो फिर तो संजना विल लुक इनटू दैट कि कब रखना है. वील हैव टू फॉलो दैट. ठीक है. एंड सेकेंडली ऑल ऑफ यू शुड रीड, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो जाएगा नहीं. उसके बाद बीच में ही विल ऑल्सो सेंड यू दैट डेटा, जब अगर हम कंपाइल कर देते हैं तो विदाउट एनी डेडलाइन. हर्ष, विल नॉट बी लाइक कि आज भेज हर्ष, दिया तो छठ के बीच में करके भेज दो. ओके, ऐसा नहीं आई होगा. आई हैव समथिंग टू से। हाँ ये हाँ. कि मैंने जो डॉग भेजा था क्वेश्चन वाला, तो उसमें हम्म. एडिटिंग भी हो सकती है, तो आई थिंक जो हम लोग ने जितने ने भी जितने क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले हैं, हम लोग उसी में एडिट कर देंगे। लाइक जिसका जो हाँ, सेक्शन है सो वो आपको वो उस हमारा सेक्शन में लुकआउट है. जा। वील आफ्टर डूइंग हाँ ऑल ऑफ दैट वील टेल देम. अभी हम लोग किए नहीं है ना वो चीज, तो करने के हाँ, बाद तो ही मैं बताएंगे. बस आई थिंक सारे तो नहीं है। हर्ष, मैं, हर्षिता, तो हम तीन हैं ही। नैना भी नैना है, भी नैना. है ही। नैना भी नैना है ही, भी. बस आई थिंक सना है मत नहीं, बट मैं उसको बता दूंगी। तो मैं आप लोग सबको ये कह रही हूँ कि वो जो डॉग जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे थे, जो फाइनल डॉग था, उसमें आप लोग आप जा देख सकते हैं वो लिंक। उसमें जा करके आप लोग के जो जो आप लोग को आंसर्स मिले हैं, आप लोग वहां पे उस चीज को पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि वो सब एक जगह रहे, और फिर जो न्यू इंटर्न्स है उन लोग को इजी हो कि उधर क्वेश्चन भी उन लोग को दिख जाए और उसके जस्ट नीचे आंसर भी मिल जाए। ठीक तो है सबको ठीक है. अलग अलग से भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही डॉक हाँ मिल ठीक है, जाएगा। वो हम लोग करके उसके बाद इन लोग को इन्फॉर्म कर देंगे. अभी के लिए इनको थोड़ा थोड़ा सा ही बताते हैं ताकि इनका दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चले. सर अभी हम्म। के लिए इनको जस्ट दे हैव टू गो एंड रीड. सेकेंडली, इफ यू ऑल रीड एंड देन इट्स गुड दैट आइडियली यू ऑल योरसेल्फ राइट ऑन द ग्रुप कि हाँ आई हैव रेड समथिंग अबाउट ESG, और यू शेयर समथिंग अबाउट ESG. आपको जो आर्टिकल बहुत अच्छा लगता है कुछ, या आपको ऐसा लगता है कुछ काफी नया और क्रिएटिव है और बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, तो आप लोग उसको ग्रुप पे शेयर करते रह सकते हो. नाउ द थिंग इज कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी लाइट. कोई बहुत हैवी टॉपिक नहीं है ESG का, बहुत लाइट टॉपिक है. बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी है. सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज वेरी इजी. इम्पैक्ट इसका बहुत हैवी है, बिकॉज ऑफ विच वी आर अंडर गोइंग few activities. Filing an RTI is one of those activities.
उसके बाद भी अभी काफी सारे एक्टिविटीज हैं विच फॉर विच यू ऑल नीड टू बी एंगेज्ड। अभी वीकेंड और छुट्टी वगैरह है, बहुत कुछ है, तो इट्स चिल राइट नाउ। बट देन एज सुन एज ऑल ऑफ इट गेट्स ओवर, यू ऑल हैव टू बी सीरियस थोड़ा सा कि भाई अभी हम शुरू करते हैं, बिकॉज अगर ठंडा हो गया तो यू ऑल वोंट एंजॉय इट। तो आपका इंटर्नशिप आपको बहुत ज्यादा ही मतलब अनएंजॉइंग लगेगा। सो टू एंजॉय दैट यू नीड टू बी रेगुलर, बिकॉज ऑफ विच वी आर ट्राइंग टू कीप रेगुलर मीट्स। नाउ अभी जो ये आप लोग जब रीड कर लोगे उसके बाद विल आल्सो सेंड यू दैट डॉक्यूमेंट, अभी जो जिसके बारे में संजना वाज टॉकिंग अबाउट। इट्स आर लुक आउट हाउ आर वी गोइंग टू अरेंज दैट डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर एंड स्टफ। और जिसका इसका आंसर नहीं भी आया एक बहुत लोग का, विल आल्सो ट्राई टू लुक इन बिटवीन, बिकॉज आई एंड दैट्स आर लुक आउट, इट्स नॉट वरिंग फॉर यू अप टिल छठ पूजा, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट योरसेल्फ नो प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट इज ईएसजी, व्हाट इज ईएसजी इन वन वर्ड। ठीक है, बस ये बस एक लाइन का तुमको समझना है। Now, apart from that, there was also few activities such as articles, blogs and stuff, जो कि वो मेन ग्रुप पे था, मतलब मेन तरु मित्रा के वो था जिसके वो हम लोग बात कर रहे HHC थे। 4C में डिस्कस हाँ हाँ, करेंगे। तो आई थिंक दे विल बी ज्वाइनिंग, तो उनका वहां पे ही करेंगे। नहीं, आई थिंक आई वाज कंसर्न अबाउट ईएसडी रिलेटेड स्टफ। सो अगर किसी को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार दे वांट टू राइट समथिंग, इट्स वेरी इजी टू राइट, और दो दो डॉक्यूमेंट, तीन डॉक्यूमेंट, चार डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद दे वांट टू राइट, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एन आर्टिकल ऑन ईएसजी into that main Taru Mitra ka blog. So I think, and I think there are times when you read something new और आपको मन करता है कि यार लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो एक पेज दो पेज का आर्टिकल या ब्लॉग पे लिख के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ईएसडी के ऊपर, बिकॉज दिस देयर इज अ न्यू टॉपिक, देयर इज अ न्यू सब्जेक्ट। तो इस पे आर्टिकल भी, देयर मे बी अ चांस दैट काफी व्यूअर्स आपके आर्टिकल को व्यू करें, एंड यू आल्सो गेट कॉन्टेक्टेड बाय समवन, यार योर आर्टिकल वाज रियली वेरी Uh, नाइस। ठीक है, सो इट Yes, वाज समथिंग one न्यू। more thing. yes, Since Harshita. many of us is left, I mean many of us hasn't joined the meeting. Arya, can you give the minutes of today's meeting in the group हाँ, for others to know that what actually happened today? anyone out of the people who've joined today, Arya, Nana Sharma, Yeah, Varda, anyone, guys? or you all can compile your individual, मतलब whatever you heard in this meeting and understood, आप लोग compile करके एक minute बना के group पे डाल दो, and we'll follow this in every meet. So whoever, Yeah. So let's assign one now. Arya, I guess, can you please do this? Oh, whatever we discussed, Arya, please write it on the group in pointers, so that those who couldn't join, they get to know what was discussed briefly. And if they have any other doubt, they can contact me, Sanjana, Harshita, and all those who were from there from before. I think Manjeet is also there. Manjeet, would you like to add something? Okay, Harshita, bye. Is Manjeet there? Yeah, I'm audible. Yes, Yeah, Manjeet, he's you are. audible. Would you like to add something? No, it's going well. We can go whatever you are discussing till now. Okay. Fine, I fine, fine. think, yeah. And one more thing. Then, what I think, what's the timing of this meeting? Like the next meeting? I think Sanjana will coordinate with others and then Like maybe she'll next decide. कल है I think FCA का, और फिर उसके next day है HHC 4C का। Okay. I think 8 only it must be. हाँ 8 है। I try to ask sir ki what time is he there? 9. Sometimes sir prefers 9. So we'll have it at 9 then. 8 PM is good, क्योंकि फिर 9 से 10 ना बहुत ज्यादा हो जाता है। 8 to 9 Then PM is good. sir may also not be available. No, sometimes he's available at Okay, मैं 9. उनसे पूछ No, लूंगी if कि क्या है हाँ, उसके हिसाब से। yeah. we'll also Yes. keep a short meet then in that ओके case. हाँ, का कंफर्म है ये कि 14 को है FCA का, और फिर 15 को HHC 4C का होगा, और फिर नेक्स्ट आगे का डिसाइड करेंगे, छठ के बाद ही होगा वो। Yeah, okay. By the way, let's put it on the maximum starting time is 8 only. Of course, if sir is available at 8, then maximum time he is available at 8. But
don't put at the 9, क्योंकि ये विंटर सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं और 10 बजे ऑलरेडी काफी लेट हो जाती है. इट्स नॉट अ समर सीजन. तो विंटर में 10 बजे काफी लेट हो जाती है, तो बेटर नहीं है मीटिंग डिस्कस करने के लिए. या मेरा भी यही कहना है, लाइक 8 to 9 इज गुड, ये सही टाइमिंग है. When 9 yeah, in summers we had the meeting, like summers में हमारे meetings 10 बजे तक चलते थे, but now it's not that, it's too late at 10 o'clock. यस. And moving towards the work, the content, then I think सभी के replies आ चुके हैं ना. नहीं रंजित, मेरा सिर्फ एक ही आया है. आई थिंक हर्ष के सारे रिप्लाई आ चुके हैं और हर्षिता के भी आ Yeah, चुके हैं. आई थिंक I सना अहमद ने भी कुछ रिप्लाई भेजे हैं. 4 yeah, आए I हैं. think तो अच्छा, okay. आप which ministry you have assigned to? एनवायरमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. No, actually I'm asking to Sanjana. ओके. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. Okay, okay. And और किनका नहीं आया था? और आई थिंक सना अहमद के भी 1-2 क्वेश्चंस आ चुके हैं. उसका आई थिंक सेबी था और हर्षिता का भी सेबी है. Okay, actually सेबी से कुछ कुछ रिप्लाईज आए थे, मैंने पढ़े थे. आई डोंट नो क्वेश्चंस क्या थे. हाँ, सेबी से भी आया. और नैना ने भी अभी मैसेज किया कि उसके भी 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन के Okay, रिप्लाई. so those who are new here, have you read any of the answers that we got from the government? Anyone who are new interns here? आई डोंट थिंक सो कि Actually, I इनके was ज्वाइन करने के बाद किसी ने आंसर्स भेजे हैं. आई थिंक इनके ज्वाइन करने से पहले ही सबने आंसर्स भेजे हैं, तो इन्हें पता नहीं होगा. okay. Actually, middle of the meeting, I was not available. I was doing something. Therefore, I don't know what you are discussing. So, if anyone can just give a brief, like in 30 to 40 seconds, then I will be happy. अच्छा मंजीत, बस यही बात हुआ है ना कि इन लोग को बोला गया कि ईएसजी के बारे में गो थ्रू करके आने के लिए. नेक्स्ट मीटिंग में इनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या समझा है, और उसके बाद फिर हमने जो क्वेश्चंस फाइल किए थे, तो जितने के भी आंसर्स आए हैं हम लोग उन सबको एक जगह लिख देंगे, क्वेश्चंस विद आंसर्स, और इन न्यू इंटर्न्स को देंगे ताकि ये लोग गो थ्रू कर सके क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर्स क्या हैं, फिर उनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, इन्हें क्या समझ में आता है, वो ये लोग बताएंगे हमें. Okay, it's quite a long process. व्हाट? I think it's a quite long process. हाँ, लाइक छठ के बाद वाले मीटिंग में इनसे ईएसजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे. एंड नेक्स्ट आई थिंक 1 वीक इज इनफ कि ये लोग एनालाइज कर सकें कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है. 1 वीक आई थिंक इज इनफ. 1 week, are we not going to have any meeting in this week? व्हाट? आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से. Okay, am I audible properly? Am I audible or not? यस, यू आर ऑडिबल. ओके, सर मैं बोल रहा हूँ कि इस वीक में कोई और मीटिंग्स नहीं है हमारी क्या? इस वीक में बताया ना मंजित, ईएसजी की नहीं, ईएसजी की आज शेड्यूल थी एक, तो वो हो गई. नेक्स्ट एफसीए की, उसके बाद एचएचसी 4सी की, उसके बाद तो छठ आ जाएंगे, उसके बाद छठ के बाद होगा. ओके ओके ओके, नो इशू. लाइक अभी आई तक किसी थिंक एचएचसी 4सी और एफसी, इन दोनों का अभी तक कोई इंट्रोडक्शन वाला मीटिंग हुआ नहीं, और इन्हें असाइन भी करना होगा कुछ कुछ वर्क. तो पिछले मीटिंग में हम लोग का सर से बात हुआ था कि तीनों ग्रुप के लिए क्या वर्क असाइन करना चाहिए, तो फिर उसी के लिए एक मीटिंग हो गई. तो ओके, एक बार इन लोग नाइस. को नेक्स्ट मीटिंग में इन लोग को हर एक मीटिंग में इन लोग को ब्रीफ कर देंगे कि आपका क्या क्या काम है, और फिर हॉलीडेज के बाद, छठ के बाद, फिर लोग उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे. Perfect, perfect. And now let's talk to some new interns. Like, are you guys having any query, anything regarding the age group or anything? It can be related to Tarimitra or group, anything. Do you want to ask anything? अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस, at least say yes or no. Okay, about from mine, since you said no.
संजना, वो जो आप मीटिंग शेड्यूल करेंगी छठ के बाद, तो छठ के बाद फिर हमारे 23rd से एग्जाम्स हैं। I ओके think तो your exams, you are from which college? पटना विमेंस कॉलेज। I think they was telling that the already exams are over from आई PwC. थिंक हम ये आई थिंक सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर का एग्जाम था अभी। हाँ। Oh, okay. ओके वरदा, नो प्रॉब्लम, आपको आपको मिल जाएगा आपको So are टाइम। you only here from the second year? नहीं, कुछ और No, लोग I'm भी No, हैं। also. that's me too. Okay, आप लोग so सब क्या सेकेंड ईयर के ही हैं? Yes. हाँ। Yes. अच्छा, 23rd से कब तक होगा एग्जाम? 29. तब तो नेक्स्ट मंथ ही हो पाएगा। आई थिंक मेरे भी एग्जाम तक सेम क्लास कर रहा है 23rd से, तो एक मीट हम लोग 21st या 22nd को रख सकते हैं, शॉर्ट मीट रख सकते हैं। 22nd को रख सकते हैं चाहे तो, और क्योंकि उसके फिर बाद फिर 21 को 20 फिर छठ तक है, है सुबह वाला। तो इधर 21 को रात में भी आई थिंक सब सोए हुए होंगे, थके हुए होंगे। हर्ष हर्ष सब ट्रैवल भी करते हैं ना एक्चुअली, जो हॉस्टलर्स हैं वो घर हाँ जाते हैं फिर घर से यहाँ आते हैं, हाँ, तो फिर ट्रैवल बहुत करते हैं लोग। तो 22nd को वी कैन कीप, क्योंकि जिसका एग्जाम अगर 23rd को है तो आई थिंक 22nd तक दे विल बी सेटल्ड। नैना का तो 22 से एग्जाम है। 22nd को ही है, यस, आई थिंक उसने तो आई मैसेज थिंक किया। कि फिर तो अभी नहीं हो पाएगा। हाँ अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर एक ही चीज हो सकता है कि यू ऑल गो थ्रू इट जब भी टाइम मिलता है, एग्जाम के बाद भी यू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट। पहले आप ईएसजी के बारे में गो थ्रू कर लो, फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लेना। नाउ इट इज द जॉब ऑफ अस फाइव कि हम लोग कब टाइम निकाल के आपको 1st 2nd 3rd दिसंबर तक या 21st 22nd तक आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो आप ट्रैवल करते करते भी तो पढ़ तो सकते ही हो, मीट अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मीट होगी भी नहीं अभी। तो वील डिसाइड की ग्रुप पे ही कि मीट कब रखना है, प्रॉब्ली अब नेक्स्ट मंथ ही हो पाएगा, 2nd या 3rd को। आई थिंक 1st या 2nd को वी कैन कीप अ मीट। आई थिंक सेकंड, क्योंकि नैना का फर्स्ट फर्स्ट को एग्जाम खत्म हो रहा है तो फर्स्ट को भी वो देख लेंगे बाद में कब करना है। डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा चिल विल करना है तो आप 2nd को कर लो, फिर एग्जाम के बाद अगर करना है तो 2nd को कर सकते हैं मीट। अच्छा ओके, जिन जिन का एग्जाम है एक बार मैसेज कर दीजिए ईएसजी ग्रुप पे कि आपका कब से कब तक एग्जाम मेरा है। खुद का एग्जाम 1st तक हो रहा है, सो बट देन आई एम ओके विद एनी डेट, बीच में भी आई एम ओके क्योंकि हाफ एन आवर का है। तो बट अगेन अगर ऑल ऑफ अस डोंट ज्वाइन देन देयर इज नो पॉइंट, तो वील हैव इट नेक्स्ट मंथ में ही, आई थिंक 2nd 3rd को, जब भी यू ऑल डिसाइड। बट टिल see, देन मेक श्योर यार, हाफ एन आवर यू गाइस डिवोट, डेली भी नहीं, मतलब 2 3 दिन हाफ एन आवर देख के। इट डिपेंड्स यार, इफ यू अंडरस्टैंड इन हाफ एन आवर 1 आवर इट्स सफिशिएंट। सो इट्स ऑन यू कि हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू अंडरस्टैंड। और आई डोंट थिंक कि 1 आवर से ज्यादा लगेगा इन टोटल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। और रिप्लाईज हम लोग ड्राफ्ट करके आपको, मतलब वो नोट में बना के, डॉक में जो कॉमन डॉक है उसमें डाल के विल सेंड यू। तो वो रिप्लाई पढ़ने में भी, बिकॉज सबको सारे रिप्लाई नहीं पढ़ना है, विल ऑल्सो डेजिग्नेट कि किसको कौन सा रिप्लाई पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस कौन करेगा, उस हिसाब से। आई डोंट थिंक इट वुड टेक यू मोर देन से 2 3 आवर्स। 2 3 आवर्स आप कभी भी निकाल सकते हैं, अभी से लेके 3rd ऑफ। अगर इफ यू फील कि 21st यू वोंट बी फ्री, तो आई होप कि यू डू दैट अभी 1 2 दिन के अंदर, क्योंकि आई थिंक छठ इज ऑन 17th, नो? यस। तो 17th को छठ है, तो टुडे इज 13th, 14th 15th 16 यू हैव लीव, 16 लीव, 15 14th यू हैव, टुमारो यू हैव, टुमारो एंड मे बी 15th का थोड़ा सा टाइम आई थिंक यू मस्ट हैव। तो which from which only 2 hours you need to take out, not more than that. I think I'm also saying a lot, 2 घंटा काफी ज्यादा भी है, बट ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लगेगा, 2 से 2.5 घंटा। विल हैव टू गो थ्रू इट, और देन यू कैन स्टार्ट ड्राफ्टिंग द नोट, मतलब वो देख के। तो see, कल तक वी look, विल सेंड look. यू, ज्यादा जितने भी रिप्लाई आए हैं विल सेंड यू द कंपाइलेशन। Okay. ठीक है संजना? ओके। जो नहीं आया वो तो विल मेंशन कि इसका नहीं आया। या मंजीत इज सेइंग समथिंग, हेलो? Yeah. So see, I was saying
instead of having meetings online, why we can't discuss on the group only? Like normal message से group अगर meetings join करते हैं, then this take times. Then I think we should till the every examination overs, we should not have a online meeting, but we can discuss in the WhatsApp group only, no? Like in the So chat. yeah, या तो अगर किसी ने ESG लाइक अभी आपके पास टाइम है PSG के बारे में गो थ्रू कर लीजिए वो समझ में अगर हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ये लोग ESG आप लोग पढ़िए आर्टिकल से ठीक है आप लोग को क्या समझ में आता है आप लोग मैसेज कर सकते हैं एक शॉर्ट कि हाँ मैंने ब्रीफली ये समझा है ना तो कम से कम पता भी चले कि आप लोग कुछ तो कर रहे हो and you all can also take inspiration from Harsh Mehta. Khali time में used to make reels and memes. So I think you can also make memes. Sometimes you don't know your teammates or your other internship ka co-interns, they may get, they may benefit from it. They may understand something. एक meme के through इतने अच्छे से कि it's not easy after reading also. So you can also, anyone who's interested in making memes and stuff, they can make memes. In खाली टाइम में एटलीस्ट यू कैन डिवोट 10-15 मिनट सीएसजी पे कोई मीम बना के सोशल मीडिया टीम को दे दिया कि यार ये अपलोड कर दो तो See, those who are already interested in this thing, they are already in the creative team. So yeah, if anyone is more interested, they can also yeah. join the team. No, Otherwise, team according to me is someone who's managing social media, but content creation team can be anyone or can be anyone apart from social media team. So content creation में anyone can create the content and social media team can simply upload the social media content on the social media. see, So yeah, the work of the creative team is to create the content only. Like those who are interested, they are already in that team. I think we Those, should flexible that anyone who's a part of any team can be side by side creating content. yeah, of course, if they want to show their creativity, why not? Yeah. I'm just telling that till now I think already काफी टाइम हो गए हैं सभी को मीटिंग्स ज्वाइन इंटर्नशिप ज्वाइन किया और अलग अलग ग्रुप सेपरेट हुए हैं तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी उनके पास काफी टाइम्स थी और मे बी सब इसी एजी के बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे सो अगर आप लोग अब तक भी मे आप बी लोगों को ये नहीं लोग जानते होंगे लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपके पास अभी भी टाइम है एक 1 to 2 days आप लोग छठ से पहले पहले तक आप लोग का ये काम है कि आप ESG का आर्टिकल पढ़िए आप लोग को क्या समझ में आता है आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए हाँ है ना या अब एटलीस्ट एटलीस्ट लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग ओके ओके या so I was saying that you आपके पास already काफी time थे but you haven't read answer that's no problem आपके you were already busy in the I don't think that you were busy in the exams क्योंकि आपके exams अब शुरू होने वाले हैं तो आपके पास ऑलरेडी टाइम्स थे बट आपने उसको यूज नहीं किया नो वरीज कोई दिक्कत नहीं है पर नाउ आप एटलीस्ट अब आपके पास अभी भी 2-3 दिन छठ पूजा के पहले भी है एग्जाम्शंस तक होने तक ऑफ कोर्स अभी ज़्यादा टाइम आप नहीं दे पाओगे क्योंकि एग्जाम्शन के पहले भी प्रिपरेशन करनी होती है आपको एग्जाम की बट आई विल सजेस्ट फ्रॉम नाउ एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू एटलीस्ट जब तक आपके पास ये पीडीएफ नहीं आती है संजना एंड हर्ष जब तक आपके पास वो क्वेश्चंस की पीडीएफ बना कर नहीं भेजते एटलीस्ट गो ऑन इंटरनेट एंड लिटिल सर्च लिटिल बिट दैट व्हाट इज ईएसजी एंड आप खुद से कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए उसके बारे में मे बी आपके पास पहले से नॉलेज होगी तो आप जो भी वो क्वेश्चंस के पीडीएफ भेजेंगे उनमें आपको समझ में आएगी ये कहना क्या चाह रहे हैं हाँ या हाँ also I had one thing कि if we tell you to join this team and that team it won't be easy for you to handle and suppose if you want to make content and even if you want to make a single content voluntarily and if we ask you to join the content creation team forever to make just a single content it won't be fair और if we ask you to social media team का आपको compulsorily part बनना ही पड़ेगा अगर if you want to create a content I don't think it would be fair plus if you don't know to create content और आप content team में हो तो भी सही नहीं है ठीक है या social या media ऑफ team कोर्स सही नहीं है सो आप जिस भी टीम में एफसीसी में प्राइमरली हो आप अगर सिर्फ और सिर्फ तरुमित्रा में हो आप ईएसजी में नहीं हो इन एनी केस यू आर फ्री टू क्रिएट कंटेंट for which for publication of that content would be on social media team so you will create that content
It's all voluntary. अगर suppose today in the morning I feel कि यार एक satire आ रहा है मेरे दिमाग में, एक humorous सा, एक sarcastic सा line आ रहा है, and I can publish that in the form of a reel या in the form of a meme. So I'll make that meme or I'll take help from someone, I'll give my idea to them, I'll make that meme. तो ये हो गया हमारा कंटेंट क्रिएशन. या किसी को मन कर रहा है, लड़की को किसी को या फिर लड़के को, कि हमको एक रील बनाना है, ठीक है, तो हम एक रील बना देते हैं, कंटेंट क्रिएट कर दिए. बट अब उस कंटेंट को पब्लिश कहाँ करना है, तो वो सोशल मीडिया टीम हैंडल करेगी. सो यू विल इमीडिएटली सेंड इट टू सोशल मीडिया टीम. सोशल मीडिया टीम देखिए कि हाँ इसको फॉरवर्ड करना है, डालना है, क्या चेंज करना है, नहीं करना है, वो सर से कंसल्ट करके, शशि सर से, और वो अपना देख लेंगे. So you are free to make content, create content, even if you are not a part of social media team. There's no obligation. So I was just asking कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको, if you have any idea, so you can also side by side में in your free time, जैसे कि reading a document, coming for a meet, you need to take out time, 1 hour, 2 hours, ऐसा जो भी. You need to be free at 8, you need to be free at 9. So since we are now not having any meet for 20 days, since you all have exams and we have chat and we already had Diwali now, so I understand and no one can force anyone कि भाई अभी आ जाओ, कल आ जाओ. But at least you all can use this time कि to contribute something minimum, कि आप एक मीम बना दो या आप एक ऐसा छोटा सा कुछ आर्टिकल लिख दो एक एक पेज का, या आप सबसे पहला बेसिक तो आप कुछ जाके पढ़ लो, बेसिक पढ़ लो ईएसडी का. सो द आइडिया ऑफ ऑल ऑफ अस टेलिंग यू ऑल कि ये कर लो इज दैट यू मेक यूज ऑफ दिस टाइम. We understand we cannot have meet, so as Manjeet suggested, we will have it on the group पे chat में we will discuss. But what if you put something, put some time, 10-20 minutes, then only we'll discuss something, no? Or if you send some article, उसी पे discuss करेंगे ना हम. So we can't teach you कि ये होता है वो होता है. We can just ask you या suggest you कि हाँ यहाँ पे जाके आप पढ़ लो, ये देख लो. So my point is, try to use this time, अभी 20 days का जो time है, try to use it in some other way. If we cannot come on meet, we can come on chat. If we cannot go through a document, make a compilation, एक छोटा सा मीम बना देते हैं या कुछ ऐसा सजेस्ट कर देते हैं किसी को. You can take inspiration from Harsh Mehta. He makes beautiful, मतलब he makes good memes. So I think Harsh can reshare those memes because they were not there when Harsh shared these memes earlier. Is Harsh online? संजना मीम शेयर कर देगी, लाइक मेरे पास है नहीं अभी. अच्छा, वो जो पहले वाला था वो हटा दिया गया, डिलीट कर दिया? हाँ लाइक सर ने कहा था तो मैंने हटा दिया था. अच्छा. ठीक है ओके. ठीक है, so whatever we'll find we'll send you. So this is my point कि you can utilize this time. Is anyone willing to say anything or do they have any questions or something? Because and you can't, you don't need to be shy, you can speak here. We are not reporting your whatever you are saying to someone else कि इसने ऐसा बोला ऐसा कुछ. You don't need to worry about that. It's just a normal meet. You can say anything. Any doubt that you have, you can put it on the chat also, whichever way you feel comfortable. आप chat में लिख सकते हो, no, yes, कुछ भी. Okay. Fine. At least this shows that you all are listening and you are engaging with the conversation. This is the Yeah, purpose you yeah, do. Nana. Please, sorry, Harsh, for interruption, but I Yeah. think Nana have some idea. Please go ahead. Nana Like Sharma. you all can use mic, I think. सब chat पे लिख रहे हैं. Am I audible? Yes, you are. Yes, so I was going through the Footprint website. I read this article on the elixir of Ganga, and I live in an area that is very close to the Yamuna River. And seeing the ever deteriorating condition of the river, I wanted to write something about it, like a sort of personal angle towards it, I guess. So I'll send in the article and you can proofread it. I would be happy to proofread that. So you can set your own deadline. You can write that article on your own along. You can set your own deadline and then you can Okay, so
I will send after 22 because I have a conference on 21, 22. So I'll send till after that. That's perfectly fine. By the way, are you in some some environment related course or something? No, no. My background is in political science. But you're pursuing pol science. Okay, okay. Fine, fine, fine. Just want to know and just want to get an idea. So thank you. I request everyone else to, come with such ideas and then write an article because see, this is something which is going to help you only. It's not something you are helping Tarumitra with. You are engaging. The thing is, Tarumitra is also getting engagements more in this way. And you personally, you are getting more engagements. And then plus, you are getting a platform to publish something. So which is not easy. I don't think I think some of you may know this and some of you may not know this. It's not easy to get a platform to publish your thoughts, your opinions, and whatever article, blogs, and stuff, etc. and stuff. So if you are getting this platform, if Tarumitra's platform you're getting to publish your blog or article or whatever you feel like, it's not something where we are fixing a criteria that this is the limit, this is the threshold. You have to write within these words. You have to write with about this topic. You can choose your topic. You're free to choose the topic. You're free to form opinion, and then you're free to send an article. If you request like Nana requested, we'll proofread that. But then what if you don't even come up with an idea? Entire internship goes on, and then you don't make use of this platform. So that won't be fair. No. So I request others also to use this platform, get their articles published. Yeah, So and considering one more thing, Harsh, do you want to share anything else? yeah, I'm done, 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 done. Okay, I thought I interrupted you. Okay. Okay, so I was saying, Nana, can you just little bit explain that in what genre you want to write articles or something? Like what should be the topic? Topic, I have not really decided. I think I will send in the group a little something that I wrote earlier about the river, and I guess I will Okay. write it in that manner only. Yeah. I Okay. will send something right now. Okay, just I will send the link. Oh, okay. Okay. So So see, this is the abstract for the article that Nana has sent. This may give an idea. I think she'll make a first or second draft, whatever. yeah. So see, I was saying just I want to ask from all of you that आप लोग like आप लोग of course आपने join किया तरुमिता तो you have something idea or something like आपके कुछ सोच कर आपने join किया होगा. Just I want to just ask that what problem you saw in your society or in anywhere that you want to solve. अगर if you don't have any like आपने बस like want to know want to learn therefore you have joined then also okay, but as that Nana said that she has an article and she is writing about some I don't know I don't able to understand what she's saying, but yeah, so I think she was already known about the problem. तो कैन एनी वन ऑफ यू कोई और ऐसे हैं जो जिन्हें ऐसा कुछ आइडिया है जो कि ऐसा कुछ सोच कर आ जाए दे नो द रियल प्रॉब्लम एंड देन दे वांट टू डू समथिंग फॉर दैट देयरफॉर दे जॉइन एनीवन लाइक नैना वर्दा आर्या अफरीन हेलो या माही या एक्चुअली मैंने कुछ लर्न करने के लिए ज्वाइन किया था बट एज यू आस्क्ड तो हमारे आसपास में जैसे कि बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बन रही हैं जो कंपनीज हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो जो नेचुरल प्रोसेस है इन्वायरमेंट के अंदर का उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करके ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बल्क लेवल पे वो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो फॉरेस्ट है उनके अंदर भी हम देख सकते हैं कि अ, बहुत ज़्यादा उनको कट किया जा रहा है या फिर जो आज अभी का करेंटली जो एक वेदर है जो गर्मी था ग्लोबल वार्मिंग है समवेयर आई रेड दैट कि जो यूएन के चेयरमैन है आई थिंक
उन्होंने लिखा था कि दिस टाइम ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल बॉइलिंग है। तो जो सिचुएशंस है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो रहा है। तो एग्जैक्टली कहाँ से कैसे हो रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट जैसे दिखता है कि बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक के यूजेस हो रहे हैं, या फिर जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, वो जो रूल्स, एक बेसिक रूल्स बनाई जाती हैं कंपनीज के लिए, वो आई थिंक फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कि वेस्टेज, ढंग से वेस्टेज का उनको, मतलब वेस्ट का क्या कहते हैं उन्हें, ऐसे आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, मतलब वो वेस्ट मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रहे ठीक से। फिर जो गैसेस उस इमिट्स होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह से, उन सब की वजह से काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं नेचुरल प्रोसेस में। पर्सनली आई फील दिस। No, nice, nice. No, so now I know that Mahi has some problem with the plastic thing. Like she joined because she want to decrease the plastic pollution, right? Yeah, basically I want to know more about like what is creating the problem in our environment. What exactly we can do to solve the things which are going on in our environment, like climate change हो रहा है इतना ज्यादा। तो हम क्या कर Okay. सकते हैं और एग्जैक्ट क्या रीजंस है इन सारी चीजों के लिए, मैं इसे और अच्छे से जानना चाहती हूँ। Okay, दैट्स very व्हाई। nice, nice. Thank you, Mahi. थैंक यू। या लाइक दैट, मैं इन्हीं जैसे अभी माही ने बताया, मैं इसी तरह से थोड़ा जानना चाहता हूँ, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन तरुण मित्रा। मे बी आप कुछ सीखने के लिए ज्वाइन किया होगा, मे बी आपके पास ऑलरेडी कुछ मोटिव होगी, आप उसको आगे परस्यू करना चाहते हो, एनीथिंग इट कुड बी। जी, अगर आप मुझे पता होगा कि आपका फाइनल मोटिव क्या है, तो देन मुझे आपके वर्क असाइन करने में इजी होगी, लाइक आपसे कांटेक्ट बात करने में इजी होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। I will be happy if everyone come forward and tell their motive also, like they are here for the learning or they are here for any motive thing. It's okay then, अगर आपके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं है, आप बस लर्न करने के लिए आए हो, then it's also a good thing. Yes, Manjeet, I have a say in it. Please go ahead, Arya. Actually, I feel that people these days are getting too self-centered about everything, be it the environment, society, or any thoughts that are prevailing. Then they need to be more of a public-centered, like they need to give priority to public because we live in a society, right? So yes, Tarumitra is a platform where we can just analyze and okay, I guess I'm forgetting things, but we No, can see, analyze and yeah. yeah, Arya, please feel free to talk in any language that you think that will be better, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किन्हीं के साथ कोई कंपटीशन करने नहीं आए, हम लोग कैजुअल बात भी आप see, अगर आप अभी तक ग्रुप में आप लोग में उतना कैजुअली बात नहीं होती, बट इफ यू अगर आप क्रिएटिव टीम में जाओगे तो वहाँ पे देखो लोग काफी जोक्स करते रहते हैं, काफी कैजुअली बात करते हैं, और वहाँ पे इसी कारण है कि क्रिएटिव टीम काफी अच्छे से वर्क कर रही है अभी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वर्क ऑफ क्रिएटिव टीम, लाइक मैंने पहले भी काफी सारे टीम्स को ये सब बनाया था, बट मैंने बाकी सबको बंद भी कर दिया क्योंकि उसका काम नहीं होता था, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द करेंट क्रिएटिव टीम। उसका कारण यही है कि काफी लोग, सारे लोग बहुत कैजुअली वहाँ पे कॉन्टेक्ट एक दूसरे से बात करते हैं, जोक्स करते हैं, और वेरी मस्त थिंग। तो मैं सजेस्ट आप सभी को करूंगा कि आप हेजिटेट मत हुई किसी चीज को बोलने से या फिर करने से, क्योंकि हेयर हम लोग यहाँ पे किसी से कंपटीशन करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं ताकि कुछ चेंजेस ला सके। तो चेंजेस तभी ला सकेंगे जब कम से कम एक दूसरे से भी बात कर पाए ढंग से। सो डोंट Yes, हेजिटेट, आप Manjeet, जो thank you so आपकी इच्छा है much. बोलिए। Yes, so my main concern about it is we people are getting too self-centered about things, and Tarumitra is a platform where I personally can contribute my thoughts. As in society, not many people gets invited to it, to all the problems, or we are not even invited to share our thoughts or reshare about the things we are experiencing. So yes, it is a good platform to participate in the things and have a say in the matters we have running in our minds. या नाइस, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि आपका कंसर्न ये है कि लोग आजकल काफी ज्यादा सेल्फ कंसर्न हो, लाइक उन्हें खुद से फर्क पड़ती है, बट सोसाइटी में क्या हो रही है उनसे फर्क नहीं पड़ती है, करेक्ट?
जी वही तो ये सारे प्रॉब्लम्स से यही तो हो रहा है ना कि एनवायरनमेंट Yes, yes. में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्योंकि वी आर गेटिंग इंडिविजुअल। सो यस, पब्लिकली अगर सोचे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिल सकता है। सो दैट इज Yeah, माय फोकस। thank you. Thank you so much, Arya. Yeah, थैंक यू। and this is also what I think this is one of the big problems of the India. Like the many, of course, the India is also some kind of family centric country. Like यहाँ पे काफी सारे लोग अपने families के साथ रहते हैं और सोचते हैं, but they don't think about the society and the other thing. Many of the places, what I have observed till now. काफी सारे स्टेट में सिटीज में मैंने जाकर थोड़े रिसर्च वर्क किए हैं अपने, तो व्हाट आई हैव थिंक मैंने देखा है तो यहाँ पे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, लाइक उन्हें खुद से फर्क पड़ती है बट सोसाइटी से नहीं ऐसी होती। आई थिंक वी नीड टू हैव सम conversation with our society, then only we can, I think that we can fix it. So can we have the next person? I think the reason is people always wait for things to happen to them. Yeah, yeah, That correct, there correct. is something that I also felt. People will think that the worst of the worst situation is not something to be bothered with, because just because I felt what I felt, it has not happened to them. And if you Yeah. see their attitude and behavior and approach towards that very problem or issue, if the same problem happens to them or comes to them and they have to face that issue or the problem, you'll see the change in the attitude and the shift towards the approach, shift in the approach towards the same. This is what I Correct. felt is also inevitable, because if you think that what is the solution to this, how can we, solve this thing, you'll find that there's actually no practical solution to this, unless and until people, experience that very same thing that they were thinking very small of. Those people won't actually realize how big of a problem it was, how concerning this issue is. So yeah, that's something that Correct. I've observed. या ऑफ कोर्स, ये सही बात ये कि जब तक खुद पर नहीं आता, ऐसे आई थिंक लोग ये कहते हैं जब तक खुद पर नहीं आती है खुद पे पता नहीं बीतती है चलता तब है। जाके, yeah. So because I feel that grass is always, green on the other side. People think that okay, it's so good, there's not something to be bothered about. But then when it happens to them, you suddenly see them shambling, okay, and then they'll realize कि अच्छा यार जो ये सच में कुछ तो था, ये बहुत serious चीज था. हाँ, Until then, you'll also find people laughing on some really very serious, situations. या करेक्ट, लाइक We can take an example of how people were laughing or people were making fun of, you know, uh, others in the during the initial period of the COVID era, COVID time, when people were dying or people were, struggling at one part of the world. Now, when that same situation happened to each and every country, the same situation happened to each and every state, and then each and every city of that state, you would find people from the rural parts of, you know, rural parts of India laughing upon people on the urban parts of India, saying that okay, these were so rich they couldn't save themselves. And then when this disease started spreading across the rural part of India, you would suddenly find all of that, foolishness of not wearing the mask and not adhering to the guidelines. It went away. People started, trembling. People started looking for ways to protect themselves when they were since the beginning being told about all of those methods and ways. So that is something what I observed. People would not think of something very seriously unless and until they are made to experience and made to feel the same. हाँ, या ऐसा है। हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अ, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन पे बहुत जगह ऐसा लिखा होता है कि रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको गंदा ना करें, कचरा ना फैलाएं। तो ऐसा बहुत लोग हैं जिसको हम देखें ये बोलते हुए कि हमारी प्रॉपर्टी, अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो हम उसको कचरा फैलाएं, कुछ भी करें, क्या जाता है।
Hmm. तो वो जब उनको खुद को कचरा नहीं दिखता है तब तक उनके समझ में नहीं आता है। तो बस यही है। Even I have a funny example. Even my own friends say that I was just going to the some of the universities I was visiting. Some of my own friends read that and say that हमारी प्रॉपर्टी है तो हम घर ले जाते हैं यार यहाँ क्यों रखी हुई है ये? So they don't care about that. Like आप देखो रेलवे स्टेशन से पहले चोरी की बहुत ज्यादा न्यूज आती थी कि ये गायब हो गई वो गायब हो गई. तो पीपल यूज टू मेक अ मीम ऑन दैट. लाइक रेलवे तो खुद लिख के रखता है कि आपकी संपत्ति है आपको ही ख्याल रखना होगा. तो इसलिए लोग समझते हैं कि उनके तो घर लेके चले जाते हैं. Yeah, we have एक्चुअली आई this फील mentality. एक्चुअली आई फील कि जब तक चीज़ें पर्सनली किसी इंडिविजुअल को बॉदर नहीं करती है तब तक वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं. कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होता है सोसाइटी के अंदर तो उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है जैसे कि हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो चीज़ हमें बॉदर नहीं कर रही है. वो कंप्लेन भी करते हैं बट उसके ऊपर कोई एक्शंस लेना पसंद नहीं करते क्योंकि वो चीज़ पर्सनली उन्हें बॉदर नहीं कर रही होती है. Yeah, हाँ and प्लस sometimes we can't take that. So like currently we are talking about this problem, but I don't think that as an individual we can do anything. and plus I would also say that there's also this very weird habit of people in general that when people see that ये मतलब दूर से दिख रहा होता है तो people feel कि हाँ बहुत easy है, complex चीज नहीं है ये. People also selectively criticize. The problem is Hmm. कि people also selectively say कि this is wrong, इसमें कोई problem नहीं है, और फिर people also selectively say कि नहीं इसमें तो बहुत problem है. So this selectivism also need to go away, this double standard, because if you see people in Delhi and parts of Delhi and people around Delhi, they would say that Delhi is highly polluted. Delhi is highly polluted. But you would never find people saying that Mumbai is also equally polluted. Just because your AQI index or air pollution index is low, and this is something which would be published by the media and websites, doesn't mean that Mumbai is not polluted. So Mumbai people selectively criticizing Delhi, Delhi's population, Delhi's pollution is way above, way below standards. This is highly selective, and this selectivism should also go up. We as individuals who are neither a part of Mumbai, I've also lived a significant part of my life in Delhi. But I would say that we as people from Patna and other Harshidi, cities, wait. other cities. I'm sorry, Sorry, there sorry to was some interrupt, but disturbance. I have some work to do, so I want to like मंजित So क्या पोस्ट बन okay, सकता fine. है? But I'll continue that I'll just say for 2 minutes that we as individuals from other cities, we look at things, when we analyze things, when we read about environment issues, when we go on articles and read articles, we get influenced by selective criticism most of the time. Because when we as students or we as people who are interested in this social work or whatever, we read articles, we mostly go through people's opinions, which is focused on some particular city, and then they form opinion on that particular city, and it is intended for a particular audience, and it is upon us to be a part of that audience base or not. Because if you see very broadly, pollution is in a lot of cities right now, but it is being selectively criticized in one city. this Yeah, of this is course. this is disturbing for us as students. Why? Because not talking about politics and stuff, it is disturbing for us because it is consuming our time. This time that we are in right now, it is of like 18, 20, 25. This is the time when we should feed ourselves with the most appropriate and the most accurate knowledge or information. When at this age, when it's not a tender age, but at this age, when we are giving our time and effort to learn something, and we are made to feed such information which is frivolous, maybe in 5 years, 10 years down the line, we'll get a different image, we'll be more mature, we'll be realizing all of it very accurately. But what about this part of our life when we are actually studying about something, we are devoting our time towards social cause, joining an NGO for whatever purpose, for interning or whatever, just because it's compulsory in your first year of college or second year of college, doesn't matter, still you are giving your time. So if you fall into that selective criticism,
And if you keep on, believing all of that, you don't have a broad understanding. It is hurting you in the long run. So you as a student, you won't have an accurate opinion about something, because your opinion would always be based on this selectivism, selective criticism, and selectivism. So I think we should be very alert, and we should be very, keenly peruse the documents that we are seeing, the articles that we are going through, whatever we are reading, the news that is being displayed to us. We should be able to differentiate, in the sense that what is being, published, or what is being shown to us, with what intention, Yeah, Harsh. right? So we should able to segregate the double standards, and true intentions, something which is based out of true intentions, and something which is a product of double standards. So that is Yeah, my Harsh, take on something. just a, Yeah. yeah, just a second. Sorry to interrupt, but I think we already got the off the topics quite. Actually, we don't have that much time. It's already 9:19. So I think we should complete this meeting ASAP. Yeah, And I am done on my part. You can go ahead with the introduction and stuff. So I also have to leave. So thank you. okay, Yeah, yeah. okay. I was just I think that one two people are left. I leave in like 5. Sorry. I leave in 5 minutes. I leave in 5 minutes. Okay. So I think that anyone else would want to talk about the what motive that you had, and maybe what you want to learn. Anyone want to talk about that? Like we have Afreen and Varda, uh, and Nana. Are you from to join from two IDs? Have you joined from the two IDs? No, that I think that there are two Nainas in the meeting. Okay. So the second Nana, can you just come again? What's your full name? Can you just unmute yourself? Okay. See, replying on chat. Okay. Okay, Nana. Okay. I think then we will talk to you in the next meeting. Anyone else want to say something? Afin, I haven't heard your voice till now. Do you want to say something? Afin, are you here? Don't know why we are here. Actually, I don't know what to see girl or boy. So what should I call he or she? Okay. Let's let's leave them. I think everyone has already told about. Yeah, the Nana Sharma. Do you want to share something like about your motive and something like that? Um, I did not really have a concrete motive when I applied for the internship, but I Mhm. think it can benefit me in finding out solutions for the environmental problems that I'm surrounded by or in the country in general. So I guess I'm here for the learning process and Okay. hearing what other people have to say about the issues. Yeah. Okay. Okay. Nice.
Okay, so I think we can end this meeting now. At last I just wanted to ask कि आप लोगों से कोई दिल्ली एनसीआर या दिल्ली की तरफ से है क्या? I am. Okay, so what's the current situation there? Surprisingly, the pollution is like a little on the lower side today. The day after Diwali, I don't know how that happened, but it's relatively better today. Okay, so I think it's what because is of the the rain situation? that we had a few days ago. I think we'll Yeah, find it out within a week. That's what I Yes, experienced. yes, yeah, yeah. In a week, we'll Of find out. thinking. yeah. What was the condition on the Diwali day? Like वहाँ भी कुछ धुआं धुआं कर रहे थे सब या फिर नॉर्मल डे था? Oh yes, I think ban का कोई भी effect नहीं था. At least not in the area where I lived. It was as usual हर साल की तरह. It was very bad. You are in NCR or in the core Delhi? Yeah, I live on the eastern side of Delhi. It's I would say it's in Okay, central, near to the central okay, Delhi, okay, understood. Is it Shahadra or Karkaduma nearby? nearby. That area is usually polluted. I mean, not in terms of pollution this Diwali, but usually. Okay, nice. I was just quite wondering that what the people is getting there. Like, I have few contacts, but not talking to them currently. So yeah, I think as Manjeet, Nana you live in said, Chandigarh, right? yeah, currently I'm I've in been to Chandigarh. Chandigarh. It is a lovely place and it is very pollution free. That's what I felt. This Yeah, it's January I went for a few yeah, days. yeah. And it's Actually, also a role model how they regulate this pollution thing. They also have no tissues, I think. Wherever I went, they said tissues have been banned. Plus yeah, also yeah. So see, Hmm. no, tissues were banned by the locals only, like not the state government. They were banned from the Yeah. like the panchayat thing, you know. हाँ वो पंचायत लोग साथ में कोऑर्डिनेट करके ही उन्होंने कुछ ऐसा कुछ प्रोविजंस लाया है दैट वाज नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट या एक गवर्निंग बॉडी के थ्रू ही हुई है बट नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट Okay. and there I is a thought that. problem in Chandigarh also. Actually, I don't. How much time you spend it there? So I went for a moot court competition like for 4 days. I went to UILS, Punjab University, Okay, okay. Chandigarh, में sector 16 I think, sector 16 or 17, I don't remember. I think it's 16. Yeah, 16. So I went there and I saw the pollution wasn't, but it was January, so I can't really tell what is the scene right now. But you must Yeah. be very No, actually, I also don't believe versed. it. I just came here for the paper submission. Like my whole research, I have came here for the. मैं यहाँ पे जब भी रहता हूँ मैं अपने रिसर्च के जो भी मेरा साल भर होता है उसका कंप्लीशन पेपर सबमिशन के लिए आता हूँ बट व्हाट मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं लाइक तो उनके हिसाब से वो बताते हैं दैट कंडीशन आर हेयर आल्सो नॉट सो गुड लाइक दिल्ली में जो मेन प्रॉब्लम है वो भी तो मेन पंजाब और चंडीगढ़ के थ्रू ही जा रहे हैं लाइक द I think कराली stubble ज्ञान burning and all. Stubble burning and all. Yeah. yeah. So here also the condition are of course not as bad as Delhi or NCR region, but yeah, यहाँ भी conditions थोड़े खराब होते हैं कभी कभार. But see, actually मुझे ज़्यादा pollution का उतना I'm not so exposed क्योंकि मैं एक जगह पे ज़्यादा रुकता ही नहीं हो जाता मेरा काम ही ऐसा है तो Oh that's yeah. how. No, I remember. So Delhi, I was there. Our school, it was closed for a week. Then since we were hostlers, so we were playing in our playground, hostel ke college, school ke. So in that, when I played after playing half an hour, I went back to the hostel and I was sneezing and it was all black cough. I was like literally surprised. This was my first winter in Delhi, and I was literally surprised because we did not abide by the rule because we were hostlers. So school banta, so we still went ahead, and we all could see the smog. We all couldn't play football very easily. We were playing football beyond 2 3 people we couldn't see. But then we went on. It was like, ठीक है खेलना खेलना है.
And then I realized the pollution is so severe. I don't remember any other day in my life. I've played in Mumbai. I was brought up in Patna. I never felt such a situation there because there is something you feel personally. What media shows you and AQI index and all, ठीक है, all of it are visuals कि हाँ ठीक है ऐसा देखा, but ऐसा feel किया, I got to know कि भाई it is really very severe, it is worse. So that is also something which has to do with ESG, and the reason why we are discussing it, I mean, I personally am discussing is because it also has something to do with ESG. ESG is also looking forward for all of these situations and the causes behind that. This framework is looking, and then the causes are mostly, you will see corporates are involved, because an individual cannot pollute the society or the atmosphere as much as a corporate can, a body who's into manufacturing and stuff can. I also read the article read by no, written by Nana. So I where I saw she's talking about this Yamuna thing, which I also felt. I've also lived in Lakshmi Nagar for quite a period of time. I also saw how polluted this Yamuna river is, and it is beyond your control that you can do anything. So I think we'll discuss all of it later on, but we'll stick to the primary job. And I think most of us have to leave. I won't take personally a lot of your time now. I'll also have to leave now. So thank you all for joining. And if Manjeet has to add anything else, then otherwise we can No, finish the. it's Thank you. already too late. It's already Yeah. too late. I don't think I will ये कुछ देर में अगर अगर कुछ देर और रोक के रखा ये this could be a punishment for them. Yeah, I know. It's also now being a punishment And for yeah, us. let me make sure to everyone like आप लोग भी don't be so serious here. Like one thing I have observed from like I'm working like this from many years. I have observed that if you think you become the so serious now, you don't come up with your full kit. What should I call your full potential. तो आप कैजुअली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लाइक इन द ग्रुप आल्सो यू कैन से जस्ट हाय एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट currently going on. So don't be hesitate to talk, and if you are having some problem, just open your mic and say, I'm having this problem, I want to do this thing like this. Okay. 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 So thank you. Bye bye. Good night. Yeah. Wish you happy Chhat Puja. And let's Yeah. get back when all of this is done. Okay. In the meanwhile, I request everyone to go through whatever you can. Good night, everyone. Thank you. Yeah. Good night. Have a good sleep, everybody.